Isoniazid is a primary antitubercular agent that A. requires. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर हेल्थ चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर अमारा, आपकी होस्ट एंड दोस्त। आज मैं लाइव में हाजिर हूं लाइव लेकर। आज हम फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज बात करेंगे। टॉपिक है एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स और जितने भी एंटीबायोटिक हैं। उसे ना हलाओ, इसे छोड़ दो, दूसरे पे लगा लो, कहीं दरवाजा बंद कर दो। हेलो जी, किसने हमें ज्वाइन किया है? जैसे ज्वाइन करें प्लीज़ मैसेज करें ताकि हमें पता चले हमारे साथ कौन कौन है और कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लाइव। कौन है हमारे साथ से प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। आई एम जस्ट चेकिंग योर मैसेज। आई एम डॉक्टर मायरा एंड यू आर वॉचिंग डॉक्टर हेल्थ। आज हम बात करेंगे पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के हवाले से, जो कि एमबीबीएस और फार्मासिस्ट के हैं होते हैं और रिसेंटली अभी हुए हैं। उससे पहले कि ये मेरी लाइव्स का सेशन चल रहा था, इस सेशन को कुछ वीडियोस रेडी थी, मैंने सोचा मैं इसे कंप्लीट कर दूँ सीरीज़ को। एंटीबायोटिक का आज टॉपिक पे हम एमसीक्यूज जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। जितने भी पास पेपर्स हैं सॉल्व आप लोगों को मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पर पीपीएससी एग्ज़ाम के हवाले से एक प्लेलिस्ट है। आप अगर देखना चाहें, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप लास्ट में देख सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप पूरी वो मतलब प्लेलिस्ट देख सकते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के उस पर मेंशन है। किसने मुझे ज्वाइन किया प्लीज़ मैसेज कर दें। जी, वेलकम न्यू मेंबर। थैंक यू सो मच मेरी लाइव को ज्वाइन करने के लिए। आज हम पीपीएससी के एग्ज़ाम के हवाले से एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज़ मैसेज कीजिएगा कौन है हमारे साथ और आप कहाँ से हैं। जो लाइव में आता जा रहा है प्लीज़ लाइव को लाइक कर दें। थैंक यू। कैसी हैं ट्रैवल विद महर? थैंक यू सो मच महर, आपने ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आप मेरी लाइव में आगे हैं और मुझे ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। और भी एक दो मेंबर्स हो रहे हैं अभी। चलिए 5-10 मिनट वेट करते हैं, सब ज्वाइन कर लेते हैं, देन फिर हम अभी 4 मेंबर्स शो हो रहे हैं। अब मुझे कौन कौन है काइंडली मेंबर्स आप लोग अपना नेम मेंशन करें ताकि हमें पता चल सके हमारे साथ कौन है और कहाँ से हैं। काइंडली ऊपर जो लोग लाइव ज्वाइन करें प्लीज़ लाइव को ज्वाइन रखें, ड्रॉप नहीं करें। हम जस्ट मेंबर्स का वेट कर रहे हैं, देन फिर हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज की टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस और फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने एग्ज़ाम देना है पीपीएससी का। गवर्नमेंट सीट्स के हवाले से, गवर्नमेंट जॉब्स ओबियसली पीपीएससी के थ्रू एक सबसे मेजर टारगेट सब हर डिपार्टमेंट का होता है कि हम उसे कैच करें, तो उसका एग्ज़ाम एक खासा मुश्किल होता है। रावलपिंडी से आप बात कर रहे हैं, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। जी प्लीज़ मेंबर्स लाइव को लाइक कर दें सब।
जी, मैं इसे स्टार्ट करूँ सेशन को, साथ-साथ मेंबर्स आते रहेंगे, ठीक है? ये रिकॉर्डेड है, मैं साथ-साथ चीज़ें अगर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी एक्सप्लेन करने की, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। Isoniazid is a primary antitubercular agent that A. Requires pyridoxine supplementation. B. May discolor the tears, saliva, urine or feces orange red. C. Causes ocular complications that are reversible if the drug is discontinued. D. May be ototoxic and nephrotoxic. E. Should never be used due to hepatotoxic potential. Wrong. ये जस्ट एक प्रैक्टिस है। आप लोगों को जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे आपको एग्ज़ाम आंसर पता होगा। मैं जस्ट अभी ऐसे आपको मार्क करके दिखा रही हूँ कि लाइक आप लोगों को एग्जैक्ट करेक्ट आंसर पता हो जाए। A 36-year-old woman recently treated for leukemia is admitted to hospital with malaise, chills and high fever. Gram stain of blood reveals the presence of gram-negative bacilli. The initial diagnosis is bacteremia and parenteral antibiotics are indicated. The records of the patient reveal that she had a severe urticarial risk, hypotension, and respiratory difficulty following oral penicillin V about 6 months ago. The most appropriate drug regimen for wrong. Which one of the following statements about ceftazidime is accurate? A. It is active against MRSA strains. B. It is the drug of choice in community-acquired pneumonia. C. It is a fourth-generation cephalosporin. D. It decreases prothrombin time. E. Its antibacterial spectrum include Bacteroides fragilis. Wrong. A patient needs antibiotic treatment for native valve, culture-positive infective enterococcal endocarditis. His medical history includes a severe anaphylactic reaction to penicillin G during the past year. The best approach would be treatment with A. Amoxicillin clavulinate. B. Aztreonam. C. Cefazolin plus gentamicin. D. Meropenem. E. Vancomycin. ये किस चीज़ के लिए कहा इसने? कल्चर पॉजिटिव इन्फेक्शन है एंडोकार्डिटिस, इसमें मैंने को आई थिंक। This drug has activity against many strains of Pseudomonas aeruginosa. However, when it is used alone, resistance has emerged during the course of treatment. The drug should not be used in penicillin allergic patients. Its activity against gram-negative rods is enhanced if it is given in combination with tazobactam. A. Amoxicillin. B. Aztreonam. C. Imipenem. Wrong. Which of the following statements about vancomycin is accurate? A. It is wrong. Which one of the following statements about ampicillin is false? A. Its activity is enhanced by sulbactam. B. It causes maculopapular rashes. Wrong. The mechanism of antibacterial action of tetracycline involves A. Binding to a component of the 50S ribosomal subunit. जी मेंबर्स किसने हमें ज्वाइन किया है? Translocase activity. C. Blood binding of amino acid gRNA to bacterial ribosomes. D. Selective inhibition of ribosomal peptidyl transferases. E. Inhibition of DNA-dependent RNA polymerase. क्वेश्चन टेट्रासाइक्लिन के हवाले से मैकेनिज्म। अच्छा, Wrong. No. Ready to enter crypto? Get started easily with your bank card or through bank transfer. Choose from over 300 cryptocurrencies, with more than 60 local currencies supported, in over 240. Clarithromycin and erythromycin have very similar spectrums of antimicrobial activity. The major advantage of clarithromycin is that it A. Eradicates mycoplasmal infections in a single dose. B. Is active against strains of streptococci that are resistant to erythromycin. जी मेंबर्स जिसने लाइव ज्वाइन की है प्लीज़ मल्टीपल आईडीज ओपन कर लें और इसे लाइक भी कर दें प्लीज़। थैंक यू। Metabolizing enzymes. E. Acts on methicillin resistant strains of staphylococci. जी क्या क्वेश्चन था रिपीट करना अगेन? Clarithromycin and erythromycin have very similar spectrums of antimicrobial activity. The major advantage of clarithromycin is that it
Dot. A. Eradicates mycoplasmal infections in a single dose. B. Wrong. The primary mechanism underlying the resistance of gram-positive organisms to macrolide antibiotics is. Dot. A. Methylation of binding sites on the 50S right. The appearance of markedly vacuolated, nucleated red cells in the marrow, anemia, and reticulocytopenia are characteristic dose-dependent side effects of. Dot. A. Azithromycin. B. Chloramphenicol. C. Clindamycin. D. Doxycycline. E. Right. In a patient with culture-positive enterococcal endocarditis who has failed to respond to vancomycin because of resistance, the treatment most likely to be effective is. Dot. A. Clarithromycin. B. Erythromycin. C. Linezolid. D. Minocycline. E. Ticarcillin. Right. All of the following factors may increase the risk of nephrotoxicity from gentamicin therapy except. Dot. A. Age over 70 years. B. Prolonged courses of gentamicin therapy. C. Concurrent amphotericin B therapy. D. Trough gentamicin levels below 2 mg per milliliter. E. Concurrent cisplatin therapy. Right. Which one of the following antibiotics is likely to be most effective agent in the treatment of an infection due to enterococci if used in conjunction with penicillin G? A. Amikacin. B. Gentamicin. C. Metalmicin. D. Wrong. एक तो ये एप्स जो है ना एड्स का बड़ा मसला है, हर वक्त एड्स आते रहते हैं कि आप लोग भी मेरी तरह से एड्स की वजह से तंग होते हैं, कुछ भी खोलो बस. Regarding the antibacterial action of gentamicin, which one of the following statements is most accurate? A. Efficacy is directly proportionate to the time that the plasma level of the drug is greater than the minimal inhibitory concentration. B. Right. Which one of the following drugs is most likely to be effective against multi-drug, resistant strains of M. tuberculosis, including those resistant to streptomycin? A. Amikacin. B. Clarithromycin. C. Gentamicin. D. E. Spectinomycin. मेहरा प्लीज मल्टीपल आईडी से ओपन कर दें, लाइव को मल्टीपल आईडी से ओपन कर दें. Which one of the following drugs is most likely to be effective against streptomycin? Has no useful activity in the treatment of A. Bubonic plague. B. Brucellosis. C. Lyme disease. D. Tuberculosis. E. Right. Your 23-year-old female patient is pregnant and has gonorrhea. The past medical history includes anaphylaxis following exposure to amoxicillin. Worried about compliance, you would like to treat this patient with a singly dose, so you chose A. Cefixime. B. Ceftriaxone. C. Wrong. In the empiric treatment of severe bacterial infections of unidentified etiology, this drug, often used in combination. Wrong. Which one of the following statements about 1 daily dosing with aminoglycosides is false? A. It is convenient for outpatient therapy. B. Adjustment of dosage is less important in renal insufficiency. Wrong. Regarding the recently introduced lipid formulation of amphotericin B, which one of the following statements is accurate? A. Affinity of amphotericin B for these lipids is greater than affinity for ergosterol. B. They are less expensive to use than conventional amphotericin B. C. They are more effective in fungal infections because they increase tissue uptake of amphotericin B. D. They may decrease nephrotoxicity of amphotericin B. E. They have wider spectrums of antifungal activity. Wrong. जी, जिसने ज्वाइन किया है काइंडली मैसेज कीजिएगा, इतनी देर में ये ऐड खत्म हो जाती है. आप कौन हैं, कहाँ से हैं, मुझे अपना नेम मेंशन कीजिएगा. Which one of the following antimicrobial drugs does not require supplementation of dosage जी, following 6 मेंबर्स हो गए हैं अभी हमारे साथ. किसने और ज्वाइन किया है, थैंक यू. मुझे मैसेज करिए अपना नेम. Tobramycin. E. Vancomycin.
जी हुज़ैफ़ा ने भी ज्वाइन कर लिया। हेलो, हाय नेहा हेयर, थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए। वेलकम टू माय चैनल। और लाइव हो रही है पीपीएससी एग्ज़ाम्स के हवाले से, थोड़े से मेडिकल के हैं, तो आप थोड़े से ऑप्शंस को जो है ना सेलेक्ट करना, ठीक है। कुछ ना कुछ एबीसी में कमेंट में लिखते रहना। बकाया मेंबर्स किधर हैं, बकाया को भी The देखें ज़रा। persistent suppression of bacterial growth that may occur following limited exposure to some antimicrobial drugs is called A. Time-dependent killing. B. The post-antibiotic effect. C. Clinical synergy. D. Concentration-dependent killing. E. Sequential blockade. जी क्या क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट करो ज़रा। The persistent suppression of bacterial growth that may occur following limited exposure to some antimicrobial drugs is called A. Time-dependent killing. Right. In which of the following groups do all 4 drugs warrant careful monitoring for drug-related seizures in high-risk patients? A. Penicillin G, imipenem, amphotericin B, metronidazole. B. Penicillin G, chlormphenicol, tetracycline, vancomycin. C. Imipenem, tetracycline, vancomycin, sulfadiazine. D. Cycloserine, metronidazole, vancomycin, sulfadiazine. E. Metronidazole, imipenem, doxycycline, erythromycin. Wrong. Which one of the following antibiotics is a potent inducer of hepatic drug metabolizing enzymes? Dot. A. Ciprofloxacin. B. Cyclosporin. C. Erythromycin. D. Rifampin. E. Tetracycline. Wrong. Data. Lactamase production by strains of Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, and Neisseria gonorrhoeae confers resistance against penicillin G. Which one of the following antibiotics is most likely to be effective against all strains of each of the above organisms? Wrong. A 19-year-old woman with recurrent sinusitis has been treated with different antibiotics on several occasions. During the course of one such treatment, she developed a severe diarrhea and was hospitalized. Sigmoid. Right. Bleomycin is used in most effective drug combination regimen for the Chemother APY of testicular carcinoma. Which one of the following statements about the drug is accurate? Dot. A. Acts mainly in the M phase of the cell cycle. B. Derived from the bark of yew trees. C. Myelosuppression is dose limiting. D. Peripheral neuropathy. Right. A high school student presents with headache, fever, and cough of 2 days duration. Sputum is scant and non-purulent. And a gram stain reveals many white cells but no organisms. Since this patient appears to have atypical pneumonia, you should initiate treatment with dot. A. Cefazolin. B. Clindamycin. C. Erythromycin. D. Gentamicin. E. Right. आज की लाइव जो है हमारी आज की लाइव हमारी एमबीबीएस और फार्मासिस्ट मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, जो लोग पीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और गवर्नमेंट के जॉब्स लेना चाहते हैं। जी आप लोग एमसीक्यूज़ के गौर से सुने और जो भी ऑप्शन लगता है, जब आपने अभी स्टडी किया इस टॉपिक को या नहीं, आप लाजमी मेंशन करें कोई ना कोई कमेंट्स में एबीसी, जो भी आप जितना भी आपको समझ आए, तो कोई नहीं, गलत भी हो तो इट्स ओके, आपकी लर्निंग हो रही है, ठीक है, प्रैक्टिस हो रही है। Chloramphenicol is particularly effective in the treatment of dot. A. Diphtheria. B. Tuberculosis. C. Emphysema. D. Rickettsial diseases. E. Streptomyces pyogenes infections. Wrong. An advantage of bleomycin over most antineoplastic drugs is its dot. A. Rapid onset of action. B. Lack of toxicity to all normal cells. C. Relative lack of bone marrow toxicity. D. Very broad spectrum.
जी 7 मेंबर्स हैं हमारे साथ अभी। जी सब अपना नेम मेंशन करें, लाइव में कौन कौन है हमारे साथ। An advantage of bleomycin over most anti-neoplastic drugs is its A. Rapid onset of action. B. Lack of toxicity to all normal cells. C. Relative lack of bone marrow toxicity. D. Very broad spectrum of activity. E. Both and B. जी आंसर दोबारा रीड करेंगे ज़रा। An advantage of bleomycin over most मेंबर्स आप लोग क्योंकि मेडिकल की लाइफ है, MBBS और फार्मासिस्ट के लिए है, तो आप लोगों के लिए मैक्सिमम के लिए हो सकता है ये टफ हो, ना समझ आए, तो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं सामने MCQs है, सॉल्व MCQs है, ये प्रैक्टिस की जा रही है, तो आप जो है जस्ट MCQs में से ABC जो भी ऑप्शन है वो बता दें, या जो आपको वर्ड समझ आते हैं वो आप कमेंट पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके कमेंट्स का एक मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। नेक्स्ट में An advantage of bleomycin over most anti-neoplastic drugs is its A. Rapid onset of action. B. Lack of toxicity to all normal cells. C. Relative lack wrong. The drug of choice for scarlet fever is A. Right. An advantage of betamethasone acetate over betamethasone sodium phosphate is A. Fewer wrong. Cyclosporin is used for जी स्वीट गर्ल ने भी ज्वाइन किया है। सलाम एवरीवन, हेलो जी। angina. C. Prevention of मैं इसको रोक के ज़रा आपके मैसेजेस लिख लूँ। हमारे साथ कौन कौन है। ट्रैवल में बहन ज्वाइन किया हुआ था पहले, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, आप बताएं। और मुस्लिम ज़ैफ़ ने भी ज्वाइन किया, हेलो कह रही हैं। रावलपिंडी से महर ने ज्वाइन किया हुआ है, और हमारे में ज्वाइन किया है, गुड नून बोल रहे हैं सबको। गुड लाइफ टॉपिक, थैंक यू जी। और इंटरव्यू ने भी ज्वाइन किया है, अनम ने भी ज्वाइन किया है और कह रही है कि गुड लाइफ टॉपिक है। इंटरव्यू थैंक यू सो मच। एंड हुज़ैफ़ अली हाय, नेहा है, थैंक यू सो मच नेहा, स्पेशल थैंक्स टू यू। और अनम थैंक यू जी। वो भी नेहा को थैंक्स बोलिए। अच्छा जी, स्वीट गर्ल नीलो हेयर, थैंक यू सो मच नीलो ये सपोर्ट करने के लिए। इस्लाम एवरीवन, ग्रेट लाइफ, नाइस लाइफ, ज़बरदस्त लाइक डेंट, थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट्स करते हैं सब मेंबर्स। और कौन कौन हमारे साथ आ रहा है, मैसेज लाजमी कीजिएगा। अगर बीच में लाइव थोड़ी सी पॉज हो तो प्लीज़ ड्रॉप मत कीजिएगा। लाइव थोड़ा सा समटाइम नेट का इशू होता है, या फिर मैं थोड़ा सा पॉज करके मोबाइल का काम करना पड़ जाता है। cryptocurrencies. With more than 60 local जी दोस्तों, आप लोग कमेंट्स करते हैं, साथ कमेंट्स जो हैं लाइव को बहुत सपोर्ट करते हैं और हमारी भी हौसला अफजाई होती है। मैं इसको आगे नेक्स्ट जो है MCQs है इससे आगे मैं क्लिक कर रही हूँ। Cyclosporin is used for A. Right. The plasma half-life of penicillin G is longer in the newborn because their A. Plasma protein level is low. B. Drug metabolizing enzymes are wrong. Choose the correct statement about the role of opioid antimotility drugs in the management of diarrheas. A. They are used to control diarrhea irrespective of its etiology. B. They should be used only as a short-term measure after ensuring that entero-invasive organisms are not involved. Wrong. Spectinomycin is an aminoglycoside-like antibiotic indicated for the treatment of A. Gram-negative bacillary septicemia. B. Tuberculosis. C. Penicillin-resistant gonococcal infections. D. Syphilis. E. Gram-negative meningitis due to susceptible organisms. Wrong. Select the antibiotic with a high therapeutic index. A. Streptomycin. B. Doxy. C. Cephalexin. D. Polymyxin B. E. None of the above. Right.
Which of the following organisms is notorious for developing antimicrobial resistance rapidly? A. Streptococcus pyogenes. B. Meningococcus. C. Trichonema pallidum. D. Escherichia coli. E. None of the above. Wrong. Widespread and prolonged use of an antibiotic leads to emergence of drug-resistant strains because antibiotics A. Induce mutation in the bacteria. B. Promote conjugation among bacteria. C. Allow resistant strains to propagate preferentially. D. All of the above. E. None of the above. Widespread and prolonged use of an antibiotic leads to emergence of drug-resistant. Wrong. Mechanism of concurrent acquisition of multi-drug resistance जी among दोस्तों प्लीज़ bacteria. स्टेटस पे भी लगाएं, मैक्सिमम A. मेंबर्स को Mutation. B. सेंड करें. Conjugation. C. Transduction. D. Transformation. E. None of the above. Right. Methicillin-resistant staphylococci do not respond to beta-lactam antibiotics because A. They produce a beta-lactamase which destroys methicillin and related drugs. B. They elaborate an amidase which destroys methicillin and related drugs. C. They have acquired a penicillin-binding protein which has low affinity for beta-lactam antibiotics. D. They are less permeable to beta-lactam antibiotics. E. None of the above. Wrong. A man has an Escherichia coli bacteremia with a low-grade fever, 101.6 degrees Fahrenheit. Appropriate management of his fever would be A. Give acetaminophen 650 milligrams orally every 4 hours. B. Give aspirin 650 milligrams orally every 4 hours. C. Give alternating doses of aspirin and acetaminophen every 4 hours. Wrong. Superinfections are more common. A man has an Escherichia coli bacteremia with a low-grade fever, 101.6 degrees Fahrenheit. Superinfections are more common with A. Use of wrong. Select the superinfections are more common. Select the antibiotic whose dose must be reduced in patients with renal insufficiency. A. Ampicillin. B. Chloramphenicol. C. Tobramycin. D. Erythromycin. E. None of the above. Wrong. Which antimicrobial should be avoided in patients of liver disease? A. Chlortetracycline. B. Cotrimoxaz. Right. What is breakpoint concentration of an antibiotic? A. Concentration at which the antibiotic lyses the bacteria. B. Concentration of the right. Is most likely to exhibit antagonism. थैंक यू जी. एक मेंबर्स हो गए हैं. कौन है हमारे साथ? Bactericidal. B. Bactericidal plus bacteriostatic for a highly sensitive organism. C. Bactericidal plus bacteriostatic for a marginally sensitive organism. काइंडली जितने भी मेंबर्स ने लाइव ज्वाइन की हुई है प्लीज़ सब लाइव को लाइक भी कर दें. हाय आशी भी आ गई है वेबलेक्स से और वेबलेक्स बोटी ने भी ज्वाइन किया है. हेलो जी, कैसी हैं आप? प्लीज़ सब मेंबर्स मेरी लाइव को ज्वाइन कीजिएगा. और मेरी लाइव डेली सुबह 11 या 12 के बीच में ऑन होती है और 4 बजे तक कुछ इसी तरह से 3 बजे तक चलती है. फिर उसके बाद 4 बजे 5 बजे के बीच में दोबारा ऑन होती है. एंड रात को क्योंकि PPSC के एग्ज़ाम्स और बच्चों को PPSC के एग्ज़ाम्स हैं और बच्चों को प्रिपरेशन करवानी है. सो उसी के हवाले से पहले भी काफ़ी सीरीज़ चलती हैं और अभी फिर ये अभी उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हो रहा है. हम डिस्कस कर रहे हैं फार्माकोलॉजी के MCQs को.
और एंटीबायोटिक्स का भी टॉपिक चल रहा है। थैंक यू सो मच आशी फॉर ज्वाइनिंग मी, गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच मुस्लिम साहब, थैंक यू। स्टेप्टो डिफरेंट जो हैं मेंबर्स हैं वो MCQs को भी बता रहे हैं ऑप्शंस का, थैंक यू। आप लोग ज्वाइन करें और मल्टीपल आंसर्स वगैरह भी कुछ बताएं अगर पॉसिबल हो, फ्री हो तो, लाइक थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करें, ठीक है। थैंक यू जी। मैं आगे इसको प्रे करती हूँ। ये लाइव बेसिकली मेडिकल की है, MBBS और फार्मासिस्ट स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उनके लिए PPSC के एग्ज़ाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग भी ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ज़रा इसको देखें। Indicate the sulfonamide whose sodium salt yields a nearly neutral solution which is suitable for topical use in the eye. Dot. A. Sulfadiazine. B. Sulfacetamide. C. Sulfamerazine. D. Sulfamethazole. E. None of the above. Wrong. Ready to enter crypto? Get cryptocurrency. जी 8 मेंबर्स हैं हमारे साथ और 6 लाइक्स हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे लाइव को लाइक नहीं किया वो भी कर दें प्लीज़। जिन लोगों ने अभी तक लाइव को लाइक नहीं किया प्लीज़ जल्दी से कर दें। बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं, मेंबर्स ड्रॉप हो रहे हैं। आई थिंक नेट का इशू चल रहा है। 10 हो गया माशाल्लाह से मेंबर्स, थैंक यू सो मच सबको ज्वाइन करने के लिए। हर आईडी से जो जिस जिसने ज्वाइन किया हुआ है सब ज़रा लाइव को लाइक भी कर दें, थैंक यू। C. They interact with many drugs. D. They do not penetrate blood-brain barrier. E. None of the above. जी क्या क्वेश्चन था, रिपीट करना हो। Sulfamethoxypyridazine and other related long-acting sulfonamides have now gone in right. आई थिंक दिस वन। ओके ये सेशन भी खत्म हो गया। अभी हम नेक्स्ट पे थर्ड इसके पार्ट पे आते हैं। ये इन्होंने एक रिव्यू दे दिया है Ready to एंड enter crypto? अब तो इतनी एड्स Get आती है ना, started easily with your bank card or through bank transfer. आई एम Choose सो from over फेड अप 300 बाय दिस। cryptocurrencies. गुड With लाइफ, more थैंक यू than जी। वेट 60 सेटिंग local कर रही हूँ। currencies ओके थैंक यू सो मच in over जिसने ज्वाइन किया है। 235 फर्दर फ्रेंड्स countries. फैमिली जिसको भी रेलिवेंट Buy मेंबर्स Bitcoin हों and other उनको assets लाजमी in शेयर करें। Mbbs. थैंक यू एक दूसरे को सपोर्ट के लिए। उनका तो बस नहीं चल रहा। आज के बिटकॉइन मुझे ये बाइनेंस ऐप डाउनलोड करवा के छोड़ेंगे, जितनी बार ऐड चल रही है। हट ही नहीं रहा है। Which of the following is not true of sulfonamides? Dot. A. They are primarily metabolized by acetylation. B. They are more likely to produce. Wrong. Adverse effects of ciprofloxacin are referable primarily to the following ओके except जी वेबलेक्स, थैंक यू A. सो मच। Gastrointestinal tract. इट्स ओके। B. Kidney. बकायदा ज्वाइन C. करें। Skin. आर्टफुल D. फेरीज ने भी हमें ज्वाइन Nervous किया है, system. थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए आर्टफुल फेरीज। काइंडली आप अपना नेम तो बताएं। आपका नाम मुझे अभी तक नहीं पता है, बस आपके चैनल का आपकी जो ID उसी का नाम पता है। आपका ओरिजिनल नेम क्या है? आशी का तो मुझे मालूम है ना। तो और कौन है इसके अलावा हमारे साथ? बाकी मेंबर्स और बकाया सब दोस्तों को भी शेयर करें। जो भी रेलिवेंट जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको लाजमी शेयर करें ताकि उनका फ़ायदा हो सके। एग्ज़ाम्स हैं गवर्नमेंट के, PPSC के हवाले से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MBBS और फार्मासिस्ट जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। Adverse effects of ciprofloxacin are referable primarily to the following except A. Gastrointestinal tract. B. Kidney. C. Skin. D. Nervous system. Wrong. A single oral dose of the following drug can cure most cases of uncomplicated gonorrhea. A. Ciprofloxacin. B. Cotrimazole. Right. Which fluoroquinolone has markedly enhanced activity against gram-positive bacteria and anaerobes? A. Pafloxacin. B. Ciprofloxacin. C. Sparfloxacin. D. Norfloxacin. जी क्या क्वेश्चन था अभी? मैं इसे दोबारा देखती हूँ। क्या क्वेश्चन था बताएं। Which fluoroquinolone has markedly enhanced activity against gram-positive bacteria and anaerobes? Wrong. A woman has an upper respiratory infection. 6 years ago, she experienced an episode of bronchospasm following penicillin B therapy.
The cultures now reveal a strain of Streptococcus pneumoniae that is sensitive to all of the following drugs. Which of these drugs would be the best choice for this patient? A. Amoxicillin clavulanate. B. Erythromycin. C. Ampicillin. D. Cefaclor. Wrong. Ready to enter crypto? उफ Get started easily उफ with your उफ bank उफ card or through bank क्रिप्टो transfer. क्रिप्टो क्रिप्टो कितना Choose इन्होंने from over बताना है मुझे 300 आज। cryptocurrencies with more than 60 local currencies. आप लोगों में से कोई ट्रेडिंग कर रहा है या जानता है? इधर तो बहुत ज़्यादा एड्स आ रही हैं भाई, मैंने इसे कहा भी नहीं है, मुझे बताओ। खुद ही मुझे तंग करी है बार बार। गूगल भाई प्लीज़ एड्स बंद कर दो, मुझे नहीं Important दिखाओ ये। microbiological features of ciprofloxacin include the following except A. Long post-antibiotic effect. B. Marked suppression of intestinal anaerobes. C. MBC values close to MIC values. D. Slow development of resistance. Wrong. Currently the drug of choice for empiric treatment of typhoid fever is A. Wrong. In the treatment of typhoid fever, currently the drug of choice in the treatment of typhoid fever, ciprofloxacin has the following advantages. A. It is effective in nearly all cases. Right. Penicillins interfere with bacterial cell wall synthesis by A. Inhibiting synthesis of N-acetylmuramic acid pentapeptide. B. Right. All of the following drugs are suitable oral therapy for lower urinary tract infection due to Pseudomonas aeruginosa except A. Norfloxacin. B. Trimethoprim sulfamethoxazole. Right. Gram-negative organisms are largely insensitive to benzylpenicillin because A. They produce large quantities of जी 10 penicillinase. मेंबर श्योर हैं अभी हमारे They साथ। do not utilize D-alanine whose incorporation in the cell wall is inhibited by benzylpenicillin. C. Benzylpenicillin is not able to penetrate deeper into the lipoprotein peptidoglycan multiplayer cell wall of gram-negative bacteria. D. Both wrong. The penicillin G preparation with the longest duration of action is A. Benzathine penicillin. B. Sodium penicillin. C. Potassium penicillin. D. Procaine penicillin. Right. If a patient gives history of urticaria, itching and swelling of lips following injection of penicillin G, then A. He will develop similar reaction whenever penicillin is in. Wrong. If a patient gives history of urticaria, itching and swelling of lips following the most important reason for highly restricted use of penicillin G injections in present-day therapeutics is its A. Narrow spectrum of activity. Wrong. Ready to enter crypto? Get started easily with your bank card or through bank transfer. Choose from over 300 cryptocurrencies with more than 6 every 4 weeks for 5 years or more is the drug of choice for A. Agranulocytosis patients. B. Prophylaxis of bacterial endocarditis in patients with valvular defects. C. Prophylaxis of rheumatic fever. D. Treatment of anthrax. Wrong. Which of the following is not a semisynthetic penicillin? A. Procaine penicillin. B. Ampicillin. C. Cloxacillin. D. Carbenicillin. Right. Cloxacillin is indicated in infections caused by the following organisms. A. Staphylococci. B. Streptococci. C. Gonococcus. D. All of the above. Wrong. The most frequent cloxacillin is indicated in infections caused by the following. The most frequent side effect of oral ampicillin is A. Nausea and vomiting. B. Loose motions. C. Constipation. D. Urticaria. Wrong. Amoxicillin is inferior to ampicillin for the treatment of the following infection. A. Typhoid. B. Shik. Wrong. Piperacillin differs from carbenicillin in the following respects. A. It is more active against Pseudomonas aeruginosa. B. It is active against Klebsiella also. C. It is acid resistant. D. Wrong. Clavulanic acid is combined with amoxicillin because A. It kills bacteria that are not killed by amoxicillin. B. It reduces renal clearance of amoxicillin. C. It counteracts the adverse effects of amoxicillin. D. It inhibits. Wrong. Amoxicillin plus clavulanic acid is active against the following organ. Wrong. A woman's neglected hangnail has developed into a mild staphylococcal cellulitis.
Which of the following regimens would be appropriate oral therapy? Dot. A. Dicloxacillin 125 milligrams Q6H. B. Wrong. Cefotaxime has the following properties except. Dot. A. It is highly active. Right. Ready to enter crypto? Get started easily with your bank card जी or through bank 11 मेंबर्स transfer. हमारे साथ किसने ज्वाइन Choose किया from है over 300 cryptocurrencies. अपना नेम With more than मैसेज 60 में local कमेंट अपना नेम मेंशन कीजिएगा जिसने ज्वाइन किया हुआ है और सब मेंबर्स लाइव को लाइक कर दें Select the fourth generation cephalosporin among the following. Dot. A. Right. Ready to enter crypto? Get started easily with your bank card or through bank transfer.
with your bank card or through bank transfer. Choose from over 300 cryptocurrencies with more than 60 local currencies supported in over 245 countries. जी दोस्तों, बहुत शुक्रिया लाइव को ज्वाइन करने के लिए। जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनका भी बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनका भी बहुत शुक्रिया। दो मिनट में ज़रा ये सेटिंग कर लो। Which toxic effect of aminoglycoside antibiotics is most irreversible in nature? Dot. A. Vestibular damage. B. Hearing loss. C. Neuromuscular blockade. D. Kidney damage. Wrong. Streptomycin sulfate is not absorbed orally because it is. Dot. A. Degraded by gastrointestinal enzymes. B. Destroyed by gastric acid. C. Highly ionized at a wide range of pH values. D. Insoluble in water. Soluble in water, I think. What do you say, guys? Yalla. Wrong. The aminoglycoside antibiotic, which is distinguished by its resistance to bacterial aminoglycoside inactivating enzymes, is dot. A. Kanamycin. B. Sisomycin. C. Amikacin. D. Tobramycin. Right. An aminoglycoside antibiotic should not be used concurrently with the following drug. Dot. A. Ampicillin. B. Vancomycin. C. Ciprofloxacin. D. Rifampin. Wrong. Ready to enter crypto? Get started easily with your bank card or through bank transfer. Choose from over 300 cryptocurrencies with more than 60 local currencies supported in over 200. All of the following statements regarding pentamidine isethionate are true except dot. A. It is indicated for treatment or prophylaxis of infection due to pneumocystis carinii. B. Wrong. Prolonged oral therapy with the following antibiotic can damage intestinal villi resulting in staturia and loose motions. Dot. A. Ampicillin. B. Tetracycline. C. Neomycin. D. Nistidine. Wrong. Hepatitis with cholestatic jaundice occurs most frequently as an adverse reaction to the following preparation of erythromycin. Dot. A. Erythromycin base. B. Erythromycin. Wrong. The following antibiotic is a first-line drug for treatment of Mycobacterium avium complex infection in AIDS patients. Dot. A. Clindamycin. B. Clarithromycin. C. Roxithromycin. Right. Roxithromycin has the following advantages over erythromycin except dot. A. It is more effective in whooping cough. B. It causes less gastric irritation. C. It has longer plasma half-life. D. It is unlikely to precipitate theophylline toxicity. Wrong. Highest incidence of antibiotic-associated pseudomembranous enterocolitis has been noted with the use of dot. A. Ampicillin. B. Chloramphenicol. C. Vancomycin. D. Clindamycin. Wrong. The drug of choice for treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infection is dot. A. Cloxacillin. B. Vancomycin. C. Erythromycin. D. Amikacin. Wrong. जी दोस्तों, 10 लोग हमारे साथ हैं।
Ready to enter crypto? Get started easily with your bank card or through bank transfer. Choose from over 300 cryptocurrencies, with more than 60 local currencies supported in over 245 countries. जिसने भी अभी तक लाइव को लाइक नहीं किया काइंडली वो लाइक कर दे. Red man syndrome has been associated with rapid intravenous injection of the following antibiotic. Right. Clarithromycin is used for the following. A. Multi-drug resistant M. Tuberculosis infection. Wrong. A 23-year-old male with a history of influenza infection. An outbreak of influenza A has just been reported in his right. Addition of clavulanic acid to amoxicillin is 2. A. Decrease the renal excretion of amoxicillin. B. Enhance the antibacterial activity of amoxicillin. C. Decrease the biotransformation of amoxicillin. Right. The aminoglycoside that can be used in amoebiasis is A. Paramomycin. B. Pharmacist. C. Amikacin. D. Netelmicin. Wrong. Tetracyclines are avoided in pregnancy because they can. A. Cause abortions. B. Cause it. Wrong. Ciprofloxacin inhibits the bacterial enzyme. A. Transpeptidase. B. DNA gyrase. C. DNA-dependent RNA polymerase. D. Dihydrofolate reductase. Wrong. Erythromycin is the drug of Erythromycin is the drug of choice in. A. Pertussit. Wrong. Cyclosporin. A. Is derived from a bacterium. B. Has a selective inhibitory effect on T lymphocytes. C. Is not absorbed orally. D. Is excreted unchanged from the body. Wrong. Tetracycline is stored in the body in. A. Protein-bound form. B. In hairs, nails and skin. C. In muscular tissues. D. In bones. Wrong. Drug which interfere with the bacterial cell wall synthesis is A. Chloramphenicol. B. Tetracyclines. C. Wrong. Antibiotics which interfere with the Antibiotics which inhibit the protein synthesis in cells is R. A. Sulfonamides and Pa. B. Isoniazid. Right. Penicillins are not effective against A. Gram-positive cocci. B. Gram-positive bacilli. C. Gram-negative bacilli. D. Gram-negative. Right. Pseudomonas aeruginosa organism is always sensitive to A. Streptomycin. Right. Drug of choice for Brucella infection is A. Right. Streptomycin is more active at. Drug of choice for Brucella infection. Streptomycin is more active at A pH 5.5 than pH 8.5 of urine. B. pH 8.5 than pH 5.5 of urine. Wrong. Dr. Jones requests your help in prescribing a protease inhibitor for his patient. He has heard that not all agents are the same and asks for your recommendation as to which agent would penetrate the blood-brain barrier. Which agent would you recommend? A. Sequinavir. B. Ritonavir. C. Indinavir. D. Nalfinavir. Wrong. Which of the following agents is not a broad-spectrum antibiotic? A. Ampicillin. B. Tetracycline. C. Chloramphenicol. D. Gentamicin. Right. Proben acid increases the plasma concentration of penicillin because A. It blocks the renal tubular excretion of penicillin. B. It prevents the metabolism of penicillin. C. It displaces penicillin from protein binding site. Wrong. Benzylpenicillin is not used orally because A. It is destroyed by acid in stomach and absorption is also incomplete. B. It is well absorbed from intestine. Right. Penicillins should not be given by A. Intramuscular route. B. Intravenous. Wrong.
Anaphylactic shock to penicillin occurs. A. Almost at once after administration. B. Between 6 to 12 hours of administration. C. Between 4 to 6 hours. Wrong. Drugs usually active against penicillinase producing Staphylococcus aureus include which of the following? I. Timentin ticarcillin clavulinate. 2. Augmentin amoxicillin clavulinate. 3. Oxacillin. A. Only I is correct. B. Only 3 is correct. Wrong. Ready to enter crypto? Get started easily with your bank card or through bank transfer. Choose from over 300 cryptocurrencies with more than 60 local currencies. Cephalosporins. A. Are more vulnerable to beta-lactamase enzyme. B. Are less vulnerable to beta-lactamase enzyme. C. Do not possess beta-lactam. Wrong. Which of the following antibiotics possess neuromuscular blocking action? A. Ampicillin. B. Streptomycin. C. Chloramphenicol. D. Sulfonamides. Wrong. Cephalosporins. A. Are Ready to enter crypto? Get started easily with your bank card or through bank transfer. जी दोस्तों, Choose from किसने over ज्वाइन किया मजीद 300 हमें? cryptocurrencies with more than 6. जी, आशी के बाद इनकम ऑनलाइन ने भी हमें ज्वाइन किया है। वेलकम जी हमारी लाइफ में। आप कौन है, कहाँ से हैं? अल्दो स्ट्रॉन्ग परीजा थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। नो 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 क्या नो कह रही हैं? लाइव इज़ ऑन बट आई एम गोइंग फॉर फ्यू मिनट्स। इट्स ओके, आप अपना काम कर सकती हैं, नो इशू। कितने टाइम की लाइव है? मैं 10 बजे तक तकरीबन लाइव करूँगी। अच्छा, और कौन है यहाँ पे? आशी, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है ना। अच्छा, और कौन है? अच्छा जी, अब हम इसको आगे स्टडी करते हैं। इसको ये जितने भी क्लिनिकल के केसेस हैं एंटीबायोटिक से रिलेटेड वो यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। होप सो स्टूडेंट्स मेडिकल के जो हैं आप लोगों के लिए लाइव फ्रूटफुल रहेगी और आप लोगों के एग्जाम भी हेल्पफुल होगी। Oroneomycin and streptomycin are used for sterilization of bowel and for dysentery because A. They are least absorbed from oral route. B. The peak concentration in blood is achieved quickly. हाँ जी, नेटवर्क कुछ They are दिनों से least ऐसे ही है। toxic to GIT. D. None of the above. बहुत शुक्रिया जिन्होंने नहीं किया उनका कह रही हूँ, क्योंकि कम लाइक शो हो रहे हैं और कब लाइव चलती है कब तक रुकती है। एक्चुअली मेरा लास्ट पे वो उस टाइम ना मुझे कंप्लीट होने वाला, मेरा टाइम कंप्लीट होने वाला है ना, तो मुझे उससे कंप्लीट करना है। तो मैं मॉर्निंग में भी मेरी कोशिश होती है चल जाए 12 बजे के करीब, 11 साढ़े 12 तक के बीच में चल जाती है, 3 बजे तक। और उसके बाद फिर जो है ना शाम में मैं 4-5 के बीच में चलाती हूँ, जितनी देर हो जाए मैं से मैं कर लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सबका लाइव में आने का। कितना कि चिकाना भी आज और खिला दूँ। सुबह लाइव में बुलाया हुआ था, तब तो मैंने इतना सारा हमने सारा सुबह की जो लाइव थी उसमें फूड व्लॉग किया था, हमने खाना मंगाया हुआ था, बिरयानी और मैकडोनल्ड बर्गर वगैरह। तो ये सब हम लोग, मैं मेरा भाई भी आज मेरे साथ गया हुआ था मेरे ऑफिस में, तो काफ़ी फ़न हम लोगों ने क्रिएट किया था। काफ़ी शुक्र मस्ती लाइक फन एंड मस्ती टाइप की वो लाइव थी जो आपने मिस कर दी है। अगर आप दिल चाहे तो आप भी इंजॉय कर सकते हैं उस लाइव को। कितने टाइम के लिए? आई गेस नोबडी देयर, आई एम हियर लाइव इज, बट आई एम गोइंग फॉर फ्यू मिनट्स। ओके इट्स ओके। मैंने मैसेजेस लेट दिखे हैं। एनीबॉडी? सो लाइव इज़ गोइंग गुड, थैंक यू सो मच। इज़ ओके मैक्सिमम अगर ठीक है ये भी, लेकिन एक ही बंदी लगी हुई है। ठीक है, अच्छा वैसे अगर आप लोग मैसेजेस करें तो रेलिवेंट जो है ना ABC के रेलिवेंट जो है ना वो करें, मतलब ये ऑप्शंस में से वो बता दें। अगर वर्ड नहीं लिख सकते और लंबा है नहीं वो टाइम ना, तो आप लाजमी इस तरह से ABC इस तरह से ऑप्शंस में से कर दें कि वो ऐसे लगे कि MCQs में से आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, ऐसे तो कर लगा दो, कोई भी ABC लिख दें, बस इस तरह से करते जाएँ ताकि आपके पार्टिसिपेट हो जाए आपका लाइव में। थैंक यू सो मच जिन्होंने मैं ज्वाइन किया हुआ है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया हमारी लाइव को ज्वाइन करने के लिए और लाइक करने के लिए। अब 9 हो गया पूरे। चलें चलो बेटा तो आगे जिसने क्या बता रहे। Oroneomycin and streptomycin are used for sterilization of bowel and for dysentery because A. They are least absorbed from oral route. B. Wrong.
खेलते हैं ये गेम? अल्लाह इतनी एड्स आते ना। Chloramphenicol is the drug of choice in A. Staphylococcal infection. B. Wrong. Drug of choice for ringworm infection is A. Wrong. In renal failure safest tetras. Drug of choice for ringworm infection is A. Griseofulvin. B. Amphotericin B. C. Nistidine. D. Neomycin. In renal failure safest tetracycline is A. Right. Penicillin was first used clinically for systemic infection. Wrong. Antiviral agents that are active against cytomegaloviruses. Right. Which of the following is a steroidal antibiotic? Wrong. The antibiotic that enters brain freely is A. Tetracycline. B. Erythromycin. Wrong. The tetracycline safe in renal failure is A. Digoxin. B. Furosemide. C. Enalapril. D. Amrinone. Right. The semisynthetic penicillin which is destroyed by acid is A. The tetracycline safe in renal failure is A. The semisynthetic penicillin which is destroyed by acid is A. Phenoxymethylpenicillin. B. Ampicillin. C. Carbenicillin. D. Coxicillin. Wrong. Why benzylpenicillin is ineffective in gram-negative infections? A. Is destroyed by penicillinase of gram-negative. Wrong. Ready to enter crypto? Get started easily with your bank card or through bank transfer. नेट का ये मौसम आजकल बारिश चल गया ना, तो काफ़ी लोगों की तरफ नेट का इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है. सो डोंट वरी अबाउट दिस. ओके, जस्ट कंटिन्यू विद मी. ओके, आज हम कीमो के और जितने भी एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी में. लेट्स स्टार्ट. 20 months after finishing her chemotherapy, the woman had a relapse of breast cancer. The cancer was now unresponsive to standard doses of chemotherapy. Wrong. The combination of trimethoprim and sulfamethoxazole is effective against which one of the following opportunistic infections in the AIDS? Right. The top 4 most commonly diagnosed cancers include all of the following except A. Lung. B. Prostate. C. Colon and rectum. D. Thyroid. E. Breast. Wrong. A 31-year-old man has gonorrhea. He has no drug allergies, but he recalls that a few years ago while in Africa he had acute hemolysis following use of an antimalarial drug. The physician is concerned that the patient has an accompanying urethritis. Wrong. The mechanism by which sulfasalazine exerts its primary action in ulcerative colitis is inhibition of A. Folic acid synthesis. B. The formation of मैं लाइव को म्यूट कर रही हूँ, अजान हो रही है. ठीक है, मान 10 मिनट के बाद ओपन करूँगी, लेकिन आपके MCQs चलते रहेंगे. Ready to enter crypto?
enter crypto? Get started easily. Ready to enter crypto? Get started. Azothioprone. A. Binds avidly to a cytoplasmic immunophilin. B. Blocks formation of tetrahydrofolic acid. C. Is a precursor of cytarabine. D. Is markedly hematotoxic and has caused neoplasms. E. Is a metabolite of mercaptopurine. जी दोस्तों, सब लाइव में ज्वाइन और मैसेजेस करते हैं। थैंक यू सो मच सबका पार्टिसिपेट करने के लिए। जो जैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, से वॉच कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। मल्टीपल आईडी सिंगल टू यू करेगा। थैंक यू सो मच सबके सपोर्ट के लिए। Body surface. Wrong. Which one of the following agents acts at this? Wrong. Tumor necrosis factor. Wrong. Ready to enter crypto?
Alla skalvi. يعني حاجة زي Alla pigna. كده كمان دي دارل تلجان لقي Io se lei che ti date già, dai. ठीक है लाइट जल्दी भी चुप कर जाओ 2 मिनट लेटर तो दो ना
Ready to enter crypto? Get started easily with your This compound reduces the need for platelet transfusions in patients undergoing cancer chemotherapy. Dot A. Cyanobalamin. B. Erythropoietin. C. Interleukin. 2. D. Iron dextran. E. Tranexamic acid. Which one of the following anti-cancer wrong? While colchicines has been used in acute gout, the drug often causes severe gastrointestinal distress. Consequently, many authorities now consider that the drug of choice for acute gout is dot A. Acetaminophen. B. Aspirin. C. Indomethacin. D. Methotrexate. E. Sulfentrazone. Ready to enter crypto? Get started easily with your bank card or through bank transfer. Choose from over 300 cryptocurrencies, with more than 50 local currencies supported in over 245 countries. Buy Bitcoin and other assets in minutes. While colchicines has been used in acute सॉरी दोस्तों लाइट चली गई थी तो शुक्र है डिकनेक्ट हो गया लाइट आ गया तो While colchicines has been used in acute gout, the drug often causes severe gastrointestinal distress. Consequently, relative to Lugol's solution, wrong. In antiviral immunity, what directly recognized and kills viral infected cells? Dot A. Cytotox, wrong.
An organ donor who is human leukocyte antigen HLA matched with the recipient of a graft is sought. Which individual is at least somewhat likely to provide a total HLA match? Dot. A. A sibling of the graft recipient. B. A parent of the graft recipient. C. A cadaver. D. All of the above. E. None of the above. Wrong. Graft versus host GVH disease is associated primarily with which type of transplantation? Dot. A. Kidney. B. Right. Which is a valid comparison of live, attenuated and killed, inactivated active vaccines? Dot. A. Replication of the organisms in a live, attenuated vaccine increases the stimulation of the immune system, and a lower dose is often required. मेंबर्स जिसने खाना खाने आ जाए, दाल चावल खा रही हूँ, मोस्ट वेलकम. Wrong. Which type of cell does not contain double standard deoxyribonucleic acid DNA? Dot. A. Human cells. B. Bacteria cells. C. Human immunodeficiency virus HIV cells. D. All of the above. E. None of the right. Which enzyme is used by the human immunodeficiency virus HIV to form deoxyribonucleic acid DNA? Wrong. Gamma immunoglobulin is considered. Dot. A. Deoxyribonucleic acid DNA. B. Ribonucleic acid RNA. C. Protein. D. Wrong. Glycoprotein is considered a protein linked to A. A carbohydrate. B. A hormone. C. A lipid. D. A deoxyribonucleic acid DNA. E. None of the above. Wrong.
Ready to enter crypto.